हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में लेट वायर और पोस्ट। और हम से लेट वायर एंड पोस्ट डिफरेंस बिटवीन लेट वायर एंड पोस्ट। हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं वायर को, ठीक है। वायर सो वायर हैज a global where is a block level scope or a global scope, you can say, uh, like this, has a global scope, ठीक है। ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल बोल सकते हैं हम लोग, और ग्लोबल बोल सकते नहीं, मीन्स ग्लोबल ही है। और फंक्शनल स्कोप भी बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर है ना, तो भी एक्सेस कर सकते हैं, और बाहर बाहर फंक्शन के बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं फंक्शनल स्कोप। अगर हमने बाहर विंडो में कहीं भी, मतलब फाइल में, मतलब बिना किसी ब्लॉक के अंदर, बिना किसी ब्लॉक के अंदर हमने नहीं की डिफाइन किया, तो हम लोग उसको ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ग्लोबल वेरिएबल। हाँ, अभी समझ गए आप लोग, आई होप। नेक्स्ट है लेट। लेट लेट क्या होता है? लेट है जो ब्लॉक लेवल स्कोप, नॉट अ फंक्शन लेवल स्कोप, फंक्शनल स्कोप, like this. If I define here a let, so we cannot access outside of the block. So, this is called block level scope. Okay. I already give a example. Don't worry. I I'm just telling you overview about late wire and cost. Cost has a also, cost is like a late. It is same like a late, but once we can define or initialize the const, we cannot change its value again. Means हम लोग अगर एक बार const में कुछ भी मतलब डिक्लेयर कर दिए, तो उसको हम दोबारा से अपडेट चेंज नहीं कर सकते। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग वायर पे चलते हुए, ठीक है। ठीक है, वायर में क्या होता है? जैसे हम लोग ने वायर हम लोग डिफाइन कर दिए, वायर ए इक्वल टू, हमने यहाँ पे, हाँ, जीते कर दिया, ठीक है। हम अगर इसको अभी कंसोल करेंगे, डॉट लॉग ए, तो वी कैन इजिली, इफ आई रन दिस कोड, तो वी कैन इजिली, जेडी प्रिंट हो गए। सो व्हाट हैपन इफ आई want to access it inside the function? ओके, चलिए हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन एक्स नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। और ये बन गया हम लोग का फंक्शन। अगर हम लोग अब इस पे हम लोग अगर कॉल करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। तो ये ये हो गया, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। अभी हम लोग इसको कॉल करा देते हैं एक्स को, ठीक है। अभी देखो, दो बार आ जाएगा, ठीक है। ओके, अनएक्सपेक्टेड एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। ओके, नो नो प्रॉब्लम। I just syntax, a function. Yes, now it's okay. Two times we take. So it can access outside of this. Where if I define here a let, so uh, it will also access the let variable. Let, if I define let, so it work like same, no difference. But this is a like global. If I here define cost, so it will work like same. Const. Here, yeah. Okay. I hope you understand the global level scope. If I change it
change it into a okay, I'm talking about let. Okay, block levels. So let if I define here let okay. So how we can understand the let? So if I uh, define here let a equal to 10. Okay. So what do you think? What will printed here? 10. Okay. Because okay now you can say 10. It's print 10 because it is a block level scope. Okay. Later is a block level scope. So it will print this 10, not this. If I here uh, print console. Okay, I'm doing console outside of the function. So you see here output Shide and 10. So what is happening here? Before calling a function, it will print a. A means JITE. Okay, and then it will call the function. Then it will print 10. Okay, so this is a if I okay, here he is not printing 10. Why? Because because let's see another okay, I'm just yeah, it was console A is not defined. Why? Why this is showing A is not defined this type of error, reference error? Because let is a block level scope. Okay. So how can we define block level scope? It's just this is like a function, but it's like a block like if one. Okay, one. Okay, here I'm just defining yeah. If I want to access this A outside of this block, we can't access it. Now you can see so now which type of error we can get? A reference error again. Again we can get a reference error. This is called block level scope. Now you understand better what I'm saying. So this is a block level scope. So it block level means we can access only inside the block. Okay. So this is called a block level scope. So next we are going to move uh, cost. Okay. So what is the difference between late and cost? Cost. Okay. So the main difference, the big difference between late and cost is now you can see very carefully what I'm doing here. Here a equal to I'm just updating a value. Okay, I'm doing 20. Then I'm printing okay console a. Then what do you think? Now what do you think? What will be printed here? It will print 20. Yeah, this is already and this is defined here. This console error because it as a block level, so we cannot access the a variable value of a. So now it will print 20. Why? Even I printed here, then what it will print? Now you can see 10 and 20. Before updating, it will print. After update, it will 20. How? This is a we can update the late. But if I have using const, so it will we will get an error. Yeah. Now you can see we will definitely get an error. Which type of error? Yeah, assignment to constant variable. They have, if I remove this console, then I again print. Then assignment to constant variable means we cannot reassign the const variable which I have already assigned. Okay. So if I okay, I'm just give me 1 second. Just I'm
what is what happening behind the scene, okay, in a deep. So I will so here what will happen in the cost. Here in our JavaScript uh, engine, when we execute calling this function, immediately what will happen? Global execution context is created. Okay, it has a two part. Two part means one is memory. Okay, and another is run part. Okay, uh, okay, memory component and run global run thread. Okay, run execute thread. Okay, second is. So first time it will print this part only this. Okay, not this. So what it will do? Firstly, it will assign A here. So this is a hosting concept. My next lecture is in a hosting. So I will definitely uh, you can better understand the hosting. So now I think you have a clear cut idea about where cost and nothing difference. This is a one. It's the most common example. Okay, I'm showing you. Most common example is if I now here if I define where inside equal to 10. So you know where is a global level scope. If I want to access this uh, okay, let me go first. I'm printing here. Okay, so then I'm here. You see here 10. Why? It will print it 10. After if I want to print it outside of the function, then what will happen? Now you can see if it's commenting. Okay. Now you can see A is not defined. Why? This will prove where is a functional scope if we declare inside the function. So this is a most asking interview question. So now I think you have a clear cut idea about lit वर्क कॉन्स्ट. सो थैंक यू गाइज, बने रहिए मेरे चैनल में. आपको मैं जावास्क्रिप्ट का एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा. आई विल डेफिनेटली डू दिस ओनली फॉर यू. यस.